students, welcome in biology class. This is Dr. Aroonaa Shende. Today we learn about plant cell structure. What is the plant cell structure? Cell is the basic unit of life in all organisms like human, animals, plants are also composed of several cells. The plant cell is surrounded by cell wall which is involved in improving shape of plant cell. Apart from the cell wall, there are other organelles that are associated with different cellular activities. Let us have a detailed look at the plant structure, functions and the different part of cell structures. हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था एनिमल सेल स्ट्रक्चर. इन द एनिमल सेल स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था what is the animal cell, structure of animal cell, detailed structure about the animal cell, nucleus, ribosomes, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosomes, mitochondria, cytoplasm, cytoskeleton and cell membrane. Today we learn about plant cell structure. In the plant cell structure, major difference between the plant cell structure and the animal cell structure, that is the presence of cell wall. The cell wall is a distinct characteristic features between the plant cell and the animal cell. Here we learn about the plant cell structure. What is the plant cell? The definition of plant cell, that is the plant cell are eukaryotic cell with a true nucleus along with specialized structure called organelles that carry out certain specific functions of a plant. This is the plant cell structure. In plant cell structure, a large central vacuole. In the central vacuole, inside there presence of the vacuole membrane, inside the presence of rapide crystals and a Durs crystals. These all are present inside the vacuoles. Beside the vacuoles, there is presence of nucleus. Inside the nucleus, presence of nucleolus. Then attachment of the nucleus, presence of a endoplasmic reticulum. The endoplasmic reticulum are of two types. Firstly, you see here the absence of ribosomes, that is smooth endoplasmic reticulum. Smooth endoplasmic reticulum, that is no ribosomes, and this is a rough endoplasmic reticulum, that is endoplasmic reticulums are present. This is the mitochondria, this is cell wall, cell membrane, Golgi apparatus, this is Golgi vessels, ribosomes, free ribosomes in the cytoplasm. In the cytoplasm presence are the chloroplast, this is mitochondria, and these whole structure inside the cytoplasm presence of the all organelles. These are the structure of plant cell. A cell wall is defined as a rigid external layer that is specific designed to provide structural support and rigidity to the plant cell. It also keeps the interior compounds of the cell intact and safe from the external environment. Cell wall. The plant cell wall is generally arranged in the three layers composed of carbohydrates like pectin, cellulose, hemicellulose, smaller amount of minerals. जैसे कि हम पढ़ रहे हैं सेल वॉल, तो प्लांट सेल में सेल वॉल कैसे अरेंज होती है, तो सेल वॉल की थ्री लेयर से सेल वॉल बनी होती है, प्राइमरी लेयर, मिडल लेयर एंड सेकेंडरी लेयर. फ्रॉम द नेटवर्क along with the structural proteins to form a cell wall, they are the three layers. Then primary cell wall, the primary cell wall situated close inside to the cell and form the mainly it is made up of the cellulose. Cellulose से बनी होती है और वो उसमें क्या होता है, तो several primary cells contain pectin, polysaccharides and structural protein. तो पहली जो primary cell wall है थ्री लेयर में से, वो किससे बनी होती है, तो cellulose से बनी होती है और वो cell wall को stretch करने में उसका जो main function है to allow the wall to stretch, and it contains the pectin, polysaccharides and structural protein. Second one, that is a middle layer and middle lamella जिसे हम बोलते हैं, तो middle lamella is also outermost layer and act as a interface between the neighboring cells of the neighboring cells or the glue of them. Then cell is composed of three layers and
टू लेयर्स के बीच में हम देखेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, तो मिडल लैमेले। और मिडल लैमेले क्या काम करता है, दो सेल को जोड़ने का काम करता है। इट इज द नेबरिंग सेल और द ग्लू ऑफ देम। जैसे हम ग्लू से दो चीजों को एकत्रित क्या करते हैं, जोड़ते हैं, उसी प्रकार मिडल लैमेला क्या करता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल को, सेल वॉल को एक दूसरे के साथ फिक्स करता है। दिस लेयर प्राइमरीली कंसिस्ट ऑफ पेक्टिन्स। और ये लेयर किससे बनी होती है, तो पेक्टिन से बनी होती है। हाउएवर अदर सब्सटेंस सच एज लेगिन्स एंड प्रोटीन्स आल्सो बी फाउंड। तो ये सिर्फ पेक्टिन से ही नहीं, तो इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो लेग्निन भी इसमें होता है और प्रोटीन्स आल्सो फाउंड इन दैट पर्टिकुलर मिडल लैमेला। एंड the secondary cell wall is formed inside the primary cell wall. Once the cell is completely grown, some type of cell, that is specially the cell that is the xylem tissues, xylem and phloem tissues, these all are the tissues of plant cell. ये हम बाद में डिटेल्स में पढ़ रहे हैं। consist of cellulose and lignin provide the additional rigidity to the waterproofing the areas. जैसे हम बोलते हैं कि सेल वॉल क्या है, तो सेल वॉल एक रिजिड स्ट्रक्चर है जो सेलुलोज से बना होता है। तो वो क्या करता है, टू प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम द आउटर मोस्ट स्ट्रेच, आउटर मोस्ट द स्ट्रेस, या फिर कोई भी आउटर मोस्ट जो भी प्रॉब्लम है या फिर स्ट्रेस है, उससे प्लांट सेल को क्या करता है, सेल वॉल प्रोटेक्ट करता है। तो फंक्शंस ऑफ सेल वॉल के फंक्शंस क्या है, तो प्लांट सेल वॉल प्रोवाइड डेफिनाइट शेप, स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी। तो प्लांट सेल में जो भी प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। तो प्लांट सेल में जो सेल वॉल है उसका फंक्शन क्या है, वो क्या करती है प्लांट सेल में, तो वो प्लांट सेल को क्या करती है, क्या देती है, डेफिनाइट शेप देती है, उसे स्ट्रेंथ देती है और उसे रिजिड बनाती है। इट ऑल्सो प्रोवाइड अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द मैकेनिकल स्ट्रेस। वो सेल को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो किससे प्रोटेक्ट करती है, जो भी मैकेनिकल स्ट्रेस है ड्यू टू द एनवायरमेंटल कंडीशंस हो या फिर फिजिकल शॉक्स जो बनते हैं सेल के लिए, तो उससे सेल वॉल क्या करेगी, सेल को प्रोटेक्ट करेगी। इट हेल्प्स टू कंट्रोल सेल एक्सपेंशन ड्यू टू द इनटेक ऑफ वाटर। जब वाटर का इनटेक होता है, कोई भी सेल वाटर इनटेक करती है, तो सेल क्या करता है, एक्सपांड होती है या फिर स्वेल होती है, तो उसको कंट्रोल कौन करेगा, सेल वॉल करेगी। ऑल्सो हेल्प्स टू प्रिवेंटिंग वाटर लॉस फ्रॉम द सेल। तरह समर डेज में तो प्लांट का वाटर क्या होता है, लॉस होता है, तो प्रिवेंट, तो सेल वॉल क्या करती है, इट हेल्प्स टू प्रिवेंटिंग वाटर लॉस फ्रॉम द सेल एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंसेस। एंड सेल वॉल क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द transporting the substances from one cell to another cell between or across the. It acts as a barrier between the interior cellulose components and the external environment. तो सेल वॉल क्या है, तो जो सेल बनी है, तो सेल का जो वो सेल वॉल है, वो इंटीरियर सेलुलर कंपोनेंट्स, जो सेल के कंपोनेंट्स है, और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, दोनों के बीच का वो क्या है, तो बैरियर है। हम यहाँ पढ़ेंगे अभी प्लांट सेल स्ट्रक्चर का फर्स्ट ऑर्गेनेल, दैट इज द न्यूक्लियस। तो आपको पता है, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा है, न्यूक्लियस क्या है, तो न्यूक्लियस इज ए मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोटिक सेल। और न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है, तो न्यूक्लियस इज ए मैनेजिंग ऑफिस ऑफ द सेल, जहाँ से सब सेल को, सेल ऑर्गेनेल्स को क्या किया जाता है, मैनेज किया जाता है। The vital function of the nucleus is to store DNA, that is genetic material, hereditary information to require the cell division. जो भी सेल डिविजन, मेटाबॉलिज्म और सेल डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए जो जेनेटिक मटेरियल होता है, तो वो जेनेटिक मटेरियल किसमें स्टोर होता है, तो न्यूक्लियस में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ DNA. Inside the nucleus, presence of nucleolus. It manufactures the cell protein, production of structure and ribosomes. So this is the structure of nucleus. Here you clearly see the nucleus is composed of two layers, और the nuclear envelope जिसे हम बोलते हैं, तो nuclear envelope किससे बना है, तो दो मेम्ब्रेन से बना है। जो इनर मोस्ट है उसे बोलते हैं हम इनर मेम्ब्रेन, देन आउटर मोस्ट है उसे बोलते हैं हम आउटर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस किससे बना है, न्यूक्लियस को प्रोटेक्शन लेयर क्या है, न्यूक्लियोलर एनवेलोप। एंड एनवेलोप किससे बना है, दो लेयर से, जिसे हम बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस को बहुत सारे छोटे छोटे क्या है, पोर्स है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर। इनसाइड द न्यूक्लियस प्रेजेंट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म। इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या है, न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोम्स एंड क्रोमैटिन्स। This nucleus
is contain DNA in the form of chromatin, and chromatin can be further compact to form a chromosomes. The nucleus surrounded by the double envelope that consists of a pore allow to certain material pass and out. जो भी न्यूक्लियर पोर है, तो न्यूक्लियर पोर में क्या होता है, जो भी सराउंडिंग न्यूक्लियर एनवेलोप कंटेनिंग जो स्पोर है वो क्या करता है, मटेरियल्स को पास इन एंड आउट करने में हेल्प करता है. द न्यूक्लियस ऑल्सो कंटेन अ रीजन कॉल्ड एज न्यूक्लियोपोलस. Second structure of plant cell is the plastid. Plastids are the membrane bound organelle that have their own DNA. They are necessary to store starch to carry out the process of photosynthesis. It is also used the synthesis of many molecules which form the building blocks of the cell. तो plastid जो है वो membrane bounded organelles है जो हर यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, जैसे कि प्लांट्स में है, उसके बाद अलगी में है. प्लास्टिड्स क्या है, plastids are double membranous organelle which are found in the cell of plants and algae. Plastids are composed of or responsible for the manufacturing and store of the food. जो प्लास्टिड है, प्लास्टिड का मेन फंक्शन क्या है, तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड, स्टोरिंग ऑफ द फूड. दिस ऑफन कंटेनिंग द पिगमेंट्स. प्लास्टिड में बहुत सारे पिगमेंट्स इंक्लूड होते हैं दैट यूज्ड इन द फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस के लिए यूज होते हैं. एंड दिस डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट्स आर हेयर. दे शो अ डिफरेंट कलर्स. टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, दे फर्स्ट इज प्रोटोप्लास्ट. This is protoplast, leucoplast, then etioplast, then amyloplast, chromoplast, then elateoplast and protenoplast, and this one is the chloroplast. And we all are familiar with the chloroplast. Why? क्योंकि हम 8th स्टैंडर्ड से पढ़ते जाते हैं कि we all are familiar to chloroplast. कैसे? तो हमें 8th स्टैंडर्ड से फोटोसिंथेसिस का चैप्टर पढ़ते हैं हम, और फोटोसिंथेसिस में हम बारंबार ये पढ़ते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो भी है वो कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है. क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, ऑब्जर्व द सनलाइट. लीफ में होता है, तो लीफ का जो ग्रीन कलर है वो ग्रीन कलर कैसे होता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट्स. तो जो भी प्लास्टिड्स है, प्लास्टिड्स के अलग अलग टाइप्स जो भी पढ़े हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर्ड पिगमेंट्स. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. अब ये ट्रांसवर्स सेक्शन है क्लोरोप्लास्ट का, जिसमें हम क्लोरोप्लास्ट को डिटेल में स्टडी करेंगे. क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट इज एन ऑर्गेनेल दैट कंटेन द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. क्लोरोप्लास्ट इज एन ऑर्गेनेल. क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक ऑर्गेनेल है जिसमें क्या होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं. वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल. दैट कैप्चर सनलाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजफुल एनर्जी, देयरबाय रिलीज द ऑक्सीजन from water. It is elongated organelle enclosed by a phospholipid membrane. Chloroplast is shaped like disc-like a shape, having a stroma. Then chloroplast containing green colored pigment called chlorophyll, and this chlorophyll is play a many chlorophyll absorb the sunlight or the light energy from the sun and use it transfer to the carbon dioxide and water into the glucose. This is the structure of chloroplast. Consists of following parts. Then first of all the membrane envelope. जो क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर है, जिसे हम बोलते हैं एक फोटोसिंथेटिक जहाँ प्रोसेस पाई जाती है, उसे हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट का ये ट्रांसफर सेक्शन है. इन द ट्रांसफर सेक्शन पहले हम पढ़ेंगे कि उसका जो एनवेलप है या फिर उसका जो आवर कोटिंग है, वो कोटिंग किससे बना होता है, तो इट कंप्राइजेस इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन ऑफ दिस chloroplasts are enclosed or compromises the inner and outer lipid bilayer membrane. जो भी मेम्ब्रेन है वो मेम्ब्रेन किससे बना होता है, तो लिपिड से बना होता है, और जो कि वो 2 लेयर में है तो उसे क्या बोलते हैं, लिपिड bilayer. It comprises inner and outer lipid bilayer membrane. The inner membrane separates the stroma from the intermembrane space. अब देखिए यहाँ आउटर मेम्ब्रेन दिख रहा है आपको और इनर मेम्ब्रेन, और आउटर मेम्ब्रेन से इनर मेम्ब्रेन क्या है, सेपरेट है बिकॉज ऑफ द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस. तो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस क्या है, द स्पेस बिटवीन इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन. Thylakoid system.
The system is suspended in the stroma. It is collection of membranous sac-like thylakoids. अब ये इनसाइड में आप देख रहे हो, ये देखो यहाँ पे हमने थैलेकॉइड को लेबल किया है, तो थैलेकॉइड क्या है? तो थैलेकॉइड इज द सिस्टम सस्पेंडेड इन द स्ट्रोमा. ये जो है इस जैसे सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, वैसे क्लोरोप्लास्ट में ये क्या होता है? स्ट्रोमा. तो स्ट्रोमा जो है, तो ये स्ट्रोमा में क्या पाए जाते हैं? थैलेकॉइड्स. तो थैलेकॉइड्स क्या है? तो क्लोरोफिल्स आर फाउंड इन द थैलेकॉइड. और क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? जो भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हम बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक ग्रीन पिगमेंट जिसे हम बोलते हैं, तो वो कहाँ पाया जाता है? इनसाइड द थैलेकॉइड. एंड द थैलेकॉइड्स आर अरेंज्ड इन ए सैक्स, जैसे कि वन बाय वन डिश लाइक स्ट्रक्चर्स और सैक में अरेंज होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ग्राना. तो ग्राना क्या है? द ग्राना इज द structure are arranged in the stack known as grana, and each granum, and these all are the granum, each granum contain around 10 to 20 thylakoids. This is one dish like structure is called as thylakoid. Inside the thylakoid presence of green photosynthetic pigment called as chlorophyll, and these 10 to 20 thylakoids which is arranged on one another, this whole structure is called as grana. Then stroma. Stroma क्या है? तो it is a colorless, alkaline, aqueous, protein rich fluid present within the inner membrane of the chloroplast present surround the grana. तो stroma क्या है? Stroma is a colorless and the aqueous fluid है, जो किससे भरा हुआ है? rich in the protein rich fluid, and inside that particular fluid presence of chloroplast. Grana. These are the site of conversion light energy into the chemical energy. Chlorophyll. Chlorophyll क्या है? It is a green photosynthetic pigment that helps in the process of photosynthesis. Then second one, the structure, plant structural organelles is a सेंट्रल वैक्यूल. तो सेंट्रल वैक्यूल जैसे कि हमें पता है, सेंट्रल वैक्यूल दिस इज द प्लांट सेल स्ट्रक्चर. इन द प्लांट सेल स्ट्रक्चर अ बिग लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट. तो वैक्यूल्स क्या है? इट ऑक्युपाइज अराउंड 30% ऑफ सेल्स वॉल्यूम इन अ मैच्योर प्लांट सेल. टोनोप्लास्ट इज द मेम्ब्रेन दैट सराउंड द सेंट्रल वैक्यूल. जो भी सेंट्रल वैक्यूल है जिसे मेम्ब्रेन एक सराउंड होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट. The vital function of central vacuole apart from the storage is to sustain rigid pressure against the cell wall. तो सेल वॉल क्या करता है? जब सेल डिवीजन होता है, तो सेल डिवीजन के टाइम पे सेल वॉल क्या प्रोड्यूस करता है? टू रिजिड प्रेशर अगेंस्ट द स्टोरेज part. The central vacuole consists of cell sap. It is mixture of salt, enzymes and other substances. This is a large central vacuole which cover the 30% of volume of the plant cell. Golgi apparatus, they are found in all eukaryotic cell which are involved in distributing synthesized macromolecules to various part of the cells. The Golgi apparatus is made up of the sac membranes bound bodies called as cisternae. And यहाँ पे क्या होता है? जैसे कि हमने इन प्लांट सेल में भी पढ़ा है, तो Golgi apparatus में एक पैकेजेस में क्या होता है? तो इट इज अ शिफ्टिंग डिपार्टमेंट. यहाँ पे प्रोटीन पैकेजेस में फॉर्म होता है, और सिस्टर्नी जो इसकी जो स्मॉल बॉडीज मेम्ब्रेन बाउंड द बॉडीज जिसे हम सिस्टर्नी बोलते हैं, तो सिस्टर्नी आर द पैकेजिंग मटेरियल विच provide a genetic material to the next one cell. And ribosomes, they are the smallest membrane bound organelle which comprise RNA and protein. They are the site from the protein synthesis, hence also referred as the protein factories of the cell. Ribosomes क्या है? Ribosome provide a site for the protein synthesis, and these ribosomes are also present on the endoplasmic reticulum which bound to the nucleus. जहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जहाँ राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, उसे रफ स्ट्रक्चर मिलता है. और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज वेल एज the ribosomes are also present in the cytoplasm. राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ बाइंडिंग में भी प्रेजेंट होता है और फ्रीली प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म.
most important functions includes the assemblage of amino acids to form a protein that are essential to carry out a cellular function. जैसे कि हमें पता है, मैंने आपको इसके पहले भी क्लियर किया है राइबोसोम क्या है. तो राइबोसोम इज प्रोवाइड अ साइट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, और प्रोटीन सिंथेसिस जो भी है असेंबलेज हुए ऑफ विथ एमिनो एसिड टू फॉर्म अ प्रोटीन. देन डीएनए प्रोड्यूस एमआरएनए बाय द प्रोसेस ऑफ डीएनए ट्रांसक्रिप्शन. जो भी इट इज अ साइट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, और प्रोटीन सिंथेसिस होता है प्रोटीन जो भी प्रोड्यूस डीएनए प्रोड्यूस करता है एमआरएनए, और बाय द प्रोसेस ऑफ डीएनए ट्रांसक्रिप्शन. Mitochondria are the energy producing organelles commonly known as the powerhouse of the cell. The process of cellular respiration occur in the mitochondria. During this process, sugar, fats are broken down through a series of chemical reactions and release energy in the form of adenosine triphosphate. माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनेल्स है जहाँ क्या होता है, तो एनर्जी प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनेल्स है, और जहाँ एनर्जी बनाई जाती है. तो एनर्जी किससे बनती है? इन द सेलुलर रेस्पिरेशन. माइटोकॉन्ड्रिया में जो भी प्रोसेस होता है जिसे हम बोलते हैं कि इट इज अ ब्रेक डाउन प्रोसेस ड्यूरिंग द शुगर एंड फैट्स एंड ब्रोक डाउन एंड फॉर्म अ adenosine triphosphate in the form of energy. ATP like energy currency of the cell, and think each molecule like a rechargeable batteries that can be used in the power, and it is called as powerhouse of the cell. This is the mitochondria. Inside the mitochondria the matrix are present. Inside the matrix is also fluid or the membrane which surrounds the whole mitochondria, and presence inside the matrix ribosomes, freely ribosomes are present. ATP synthetase enzymes also present. DNA is also present in the mitochondria, and intermediate space between the membranous outer and inner membranous. Some cisternous जंक्शंस ऑल्सो प्रेजेंट. सिस्टर्नी जैसे हमने गोल्गी बॉडीज में देखा है. गोल्गी बॉडीज क्या है? तो गोल्गी बॉडीज अपने एक बाउंडेड मेम्ब्रेन बनाता है, और उसे बाउंडेड स्ट्रक्चर को हम सिस्टर्नी बोलते हैं, और गोल्गी एपरेटस को हम सेल का क्या बोलते हैं? तो शिपिंग डिपार्टमेंट. तो वो क्या करता है? तो एक जगह से हेरिडिटरी मटेरियल को ट्रांसफर करता है अदर ऑर्गेनेल्स. तो जो सिस्टर्नी ट्रांसफर होके आती है फ्रॉम द गोल्गी एपरेटस, तो वो सेटल डाउन होगी माइटोकॉन्ड्रिया पे. तो वो कहाँ सेटल डाउन होंगी? दिस एरिया. तो यह एरिया को क्या बोलते हैं हम? सिस्टर्नी जंक्शन. यानी वो यहाँ पे आके क्या होगा? सेटल डाउन होगा और यूनाइट होगा विद द माइटोकॉन्ड्रिया. This is endoplasmic reticulum. Two types of endoplasmic reticulums are found in each cell of eukaryotic cell. Here, the rough endoplasmic reticulum, nucleus को bounded by endoplasmic reticulum होता है. जिस endoplasmic reticulum फिक्स करता है राइबोसोम्स को, जहाँ राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है, तो उसे हम बोलते हैं rough endoplasmic reticulum. And in smooth endoplasmic reticulum, because no ribosomes on its surface. The function of rough endoplasmic reticulum is modifying protein that will be shipped on other location in the endomembrane system, the cell surface or the out of the cell. And smooth endoplasmic reticulum, that is synthesis of lipids such as fatty acids, phospholipids and steroids, and these deoxifying molecules such as alcohol, drugs and metabolic waste products are also present in the smooth endoplasmic reticulum. Lysosomes are called as suicidal bags. Lysosomes क्या करता है? In the lysosomes, जहाँ की सेलुलर वेस्टेज मटेरियल जो होते हैं उसे वो क्या करता है? तो डिस्पोजल करता है, और उसे सुसाइडल बैग्स क्यों बोलते हैं? तो लाइसोसोम्स में जो भी वेस्टेज मटेरियल आता है, तो वो उसके प्रेजेंस ऑफ जो भी एसिड उसमें प्रेजेंट होता है, तो उसको वो क्या करता है? रिसाइकलिंग करता है या ब्रोकन डाउन करता है उस ऑर्गेनेल्स को इन स्मॉल पीसेस, एंड दीज broken down pieces are again reused in the process of transcriptions. This is the structure of lysosomes, organelle involved in digestion and waste removal system. These all are the cell organelles present in the plant cell. अभी हम देखते हैं plant cell types. In the plant cell types, cell of a matured and higher plant becomes specialized to perform certain vital functions that are essential to their survival.
एंड एसेंशियल टू देयर सर्वाइवल प्लांट प्रोड्यूस करता है ऐसे कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ सेल टाइप्स. Few plant cells are involved in the transportation of nutrients and water to the whole plant body, while other for storing food. These specialized plant cells include parenchyma cells, collenchyma cells, sclerenchyma cells, xylem cells, and phloem cells. These parenchyma, sclerenchyma, and collenchyma, these all three cells are united together, or these three cells are called as cortex of the cortex region of the plant cell. And xylem and phloem, these two cells are the present in the vascular bundles. They functions to they provide transportation of nutrition and water to whole plant body. These are the descriptive part of these plant cells, and in the particular plant cell types in the next lecture हम क्या करेंगे कि next chapter हमारा जो भी next class video रहेगा उसमें हम plant cell types का आपको detail with their structures में पढ़ाएंगे. प्लांट सेल फंक्शन, प्लांट सेल का फंक्शंस क्या है, क्या वो करता है, तो प्लांट सेल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्लांट. प्लांट सेल क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द प्लांट. क्योंकि स्केल को हम क्या डिफाइन करते हैं, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, एंड प्लांट सेल आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द प्लांट्स. प्लांट्स का जो भी पर्टिकुलर प्लांट्स का जो फॉर्मेशन है वो किस पर निर्भर करता है, तो प्लांट सेल पर. फोटोसिंथेसिस मेजर फंक्शन परफॉर्मिंग बाय द प्लांट सेल. फोटोसिंथेसिस मेजर फंक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमें सबको पता है कि यूकैरियोटिक सेल में एक प्लांट सेल ही ऐसा है या फिर प्लांट ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो खुद का फूड खुद बनाता है. उसे हम ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म जिसे बोलते हैं प्लांट्स को. और जो एनिमल्स है इंक्लूडिंग दी human being also, they fully depend on the plant and their parts. And photosynthesis occur in the chloroplast of the plant cell. In this process, plants prepare their own food with the help of absorption of sunlight and convert it into the chemical energy by the utilization of sunlight and carbon dioxide and the water molecule. Energy is produced in the form of ATP in this process. जो भी सिंथेसिस है इसमें एनर्जी कौन से फॉर्म में एब्जॉर्ब की जाती है, तो एनर्जी इज प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. Few plant cells help in the transport of water and nutrients from roots and leaves to different part of the plant. जैसे हमने देखा है कि few plant cells, कौन से few plant cells, जैसे हम बोलते हैं vascular bundles. In vascular bundles, xylem and phloem play a vital role to the absorption of waters and minerals from the roots and provide to the different parts of the plant leaves to their flowers. Cell membrane. It is a semi-permeable membrane that is present within a cell wall. It is composed of thin layer to the protein and the fat, and these cell membrane are responsible for or give the permission to the substance enter and out from the cell. Thank you students. Like and subscribe for the more videos. Thank you.